Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. So this is an interactive edition of Market Mantra. So if you have any queries about mutual funds, pick up the phone and call us, and our expert will answer it live right here for you. The numbers to call us on are 2371-7106 and 2371-7117. If you're calling from outside Delhi, prefix that with 011, or if you're calling from a mobile phone, prefix with a 011. The numbers once again, 2371-7106, 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar, and with me is my Hindi co-anchor Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक खबरों पर चर्चा करते हैं और श्रोताओं, आज रविवार है और आज के हम इस अंक में म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे और इस विषय पर आप हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें आप इन नंबरों पर सीधे फोन करके सवाल पूछ सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। India's gross direct tax collection jumps 24% to 8,98,000 crore rupees in the current fiscal. Foreign investors pump in over 2,400 crore rupees into the Indian equities market in the first week of October, and global crude oil prices rise for the second straight week. Brent surges 11% this week. चालू वित्त वर्ष में भारत का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़कर 8,98,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में 2,400 करोड़ रुपए का निवेश किया और कच्चे तेल के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़े। ब्रेंट क्रूड के मूल्य में 11% का उछाल दर्ज किया गया। In an indicator of robust economic activity, the gross direct tax collections have jumped by over 24% to 8,98,000 crore rupees in the current financial year as compared to last year, the Finance Ministry said in a statement. The Finance Ministry said the provisional figures of direct tax collections till yesterday continue to register steady growth. After adjusting refunds, direct tax collections stood at rupees 7.45 lakh crores, 16.3% higher than the net collection for the corresponding period a year ago, the ministry said in a statement. The ministry also said that this collection is over 52.5% of the total budget estimates of direct taxes for the current fiscal. The refunds amounting to 1,53,000 crore rupees have been issued during 1st April to 8th October this year, which are 81% higher than refunds issued during the same period in the preceding year. और विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में 2,400 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजारों से 7,600 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 3 से 7 अक्टूबर के बीच इक्विटी बाजारों में 2,440 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन इसी अवधि में डेट बाजार से 2,950 करोड़ रुपए निकाल लिए। अगस्त में एफपीआई ने शेयर बाजारों में 51,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जुलाई में यह राशि 5,000 करोड़ रुपए रही थी। जुलाई से पहले विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर 9 महीने तक लगातार बिकवाली की थी। There are common things that people have to look at. Of course, there's a lot of volatility, and you normally advise people to not look at television or the newspapers or look at whatever the immediate events are. But what are the top 3 things that you would recommend that
an investor who's a regular investor, he's not a first-time investor, what are the things that he or she should look at while picking a mutual fund in today's environment? No, one is that, most investors, still get attracted. It is, if saying for me is very easy, that don't listen to the market mantra, or, don't get into ball-by-ball tracking of the market. But when you see a free fall, what you saw, on Friday, the U.S. market, the way it fell, it is quite unnerving. When you see a Nasdaq 100 going down by 5%, sometimes to build that 5%, it takes a month or so. Or, it has gone back in time by nearly 2.5 years, or wiped out that much of gains and steady gains from a set of companies which looks still promising. There are all kind of concerns. So it's easier said, hard to do. Few things which investors should keep in mind. They should keep revisiting their premise. Is their money which they invested for the long run can remain for the long run? And second is that are they still diversified? Because what happens in the course of investment is that we tend to get attracted to what is doing much better in recent times, and that is where the portfolio gets tilted. And third is that sometimes we also get greedy in terms of sometimes it is not the long-term money, but finds its way into equity. Just revisit and get little more conservative. और इस बीच फरीदाबाद से हमारे श्रोता सुभाष हमसे जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अरे मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता था कि अभी ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इसमें एक सीनियर सिटीजन को किसमें इन्वेस्टमेंट चालू रखना चाहिए? जैसे हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें इन्वेस्टमेंट SIP चल रहा है फ्लेक्सी कैप में और फिर उसमें लार्ज कैप में, तो वो क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उसको बंद कर देना चाहिए? आप सीनियर सिटीजन हैं और अपना कर रहे हैं, मतलब अभी आपको अपने निवेश से आमदनी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको कुछ सालों तक पैसे की जरूरत नहीं है और या वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी आमदनी की जरूरत नहीं है 2-4 साल से, तो आप बिल्कुल निश्चिंता से इस निवेश को जारी रखें। उसका कारण क्या है कि बाजार से ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए जरूरी है कि ये जो हम बहुत पोलाइट तरीके से वोलेटिलिटी कह रहे हैं, वो वोलेटिलिटी नहीं है, ये गिरावट है। पिछले 1 महीने में बाजार 2% गिरा है। पिछले 1 साल में बाजार लार्ज कैप फंड कहीं गए नहीं है, कोई मुनाफा नहीं हुआ है। 3 साल का रिटर्न 16.6% सालाना रिटर्न है लार्ज कैप फंड का, और फ्लेक्सी कैप फंड का 17% है। उस 17% आमदनी के लिए, उस 17% सालाना रिटर्न के लिए जो कि फ्लेक्सी कैप में मिला है, उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के पीरियड में आपका पैसा लगता रहे। अगर आप अभी बंद कर दीजिएगा और जब केवल बाजार बढ़ जाएगा तब आप शुरुआत करने हो जाएगी, तो ये रिटर्न आपका ज्यादा नहीं होगा। सस्ता लगाने का जो दौर है उसमें आपका निवेश जारी रहना चाहिए। Our next caller is from Delhi. Gautam is online with us. Gautam, welcome to Market Mantra. Please put your question. Thank you very much. Very good evening to everyone. Good evening. Sir, yesterday I asked a question from Sharad sir, but मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ही थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं वो क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। वीरेंद्र जी, सर वो एक्चुअली गोल्ड बॉन्ड, RBI की गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ICICI बैंक के ऑनलाइन के थ्रू मैंने जब आपको ऑप्शन को ऑप्ट किया तो मैंने डीमैट के ऑप्शन पे टिक नहीं किया। तो अगर अब मैं उसको डीमैट में कन्वर्ट कराना चाहूँ, मैं ग्रो का डीमैट अकाउंट यूज करता हूँ, तो क्या उसका कोई प्रोसेस है कि मेरी जो पिछले 3 साल से जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ RBI के गोल्ड बॉन्ड्स में, मैं उनको अब डीमैट में कन्वर्ट करवा पाऊँ? सेकंड क्वेश्चन सर, NFO क्या होता है? इज इट जस्ट लाइक IPO फॉर म्यूचुअल फंड एंड इज इट सेफ फॉर जनरल पब्लिक? बेसिकली जिसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ ज्यादा से ज्यादा 5 साल, तो किस तरह से NFO में इन्वेस्ट किया जाए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? काइंडली गाइड। थैंक यू जी। आपका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसको डीमैट में जरूर कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक पेपर प्रोसेस है और वो अपने ब्रोकर से संपर्क करें, ग्रो से संपर्क करें और वो आपकी मदद करेंगे उसको डिमेटेरियलाइज करने में। और दूसरा कि हाँ बिल्कुल NFO कंपनी के IPO की तरह होता है, लेकिन उससे बहुत अंतर है।
अंतर ये है कि जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो एक कंपनी का पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफर, या तो कंपनी में पैसा आ रहा होता है या वो कंपनी पब्लिकली ट्रेड होगी और पहली बार पुराने निवेशक अपना शेयर बाजार में पहली बार आम लोगों को बेच रहे हैं। और तो वैसी स्थिति में बहुत सारी अनिश्चितता होती है। हमें पता नहीं होता है कि इस कंपनी का रुख कैसा होगा, बाजार का रुख कैसा रहेगा, कितना बड़ा आईपीओ रहेगा। आईपीओ हमेशा ही एक डिफाइंड क्वांटिटी में आता है। आप देखते होंगे कि ये शेयर, ये आईपीओ 100 रुपए का है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा देते हैं तो फंड मैनेजर बहुत सारी कंपनियों में अपने नियत के हिसाब से या स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो पैसा लगाता है। वो 50 करोड़ आ जाए तब भी लगा देगा, 1000 करोड़ आ जाए तो भी लगा देगा। तो एनएफओ में वैसा नॉवेल्टी नहीं है जो कि जिस तरह का डिमांड सप्लाई, क्योंकि आप देखते होंगे कि आईपीओ में कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अच्छी है अगर और उसका इश्यू अगर छोटा है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोगों को मिलता है। तो एक उसमें बहुत बड़ा लॉटरी का एलिमेंट होता है। जिसको अलॉटमेंट होता है उसको कुछ लॉटरी मिलने के जैसा आभास होता है और उसका असर बाजार में भी दिखता है। अगर कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में हो और सप्लाई में कम हो तो उसका दाम हमेशा आमतौर पर ज्यादा खुलता है, लेकिन लंबे समय में वो सब चीज इवन आउट हो जाता है। अगर कंपनी मुनाफा नहीं कमाए, मुनाफा सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है कंपनी के स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। अगर कंपनी लंबे समय तक पैसा, जैसा आपने देखा होगा पेटीएम और जोमैटो बड़े पॉपुलर आईपीओ थे जिसमें पहली बार लोगों ने पैसा लगाया, बड़ी उम्मीद के साथ लगाया, लेकिन मुनाफा नहीं, दाम लुढ़क गया। और जब मुनाफा अगर ये कंपनियां बनाने लगेंगी, अगर कभी बनाने लगेंगी और या बनाने का रुख बनेगा तो स्टॉक का रुख बदल जाएगा। लेकिन अभी इनमें आधा या 1/3 पैसा या 2/3 पैसा भी अपने क्रश पे डूबा हुआ था। There's another thing that has been used by salespeople during NFOs for a long time, especially in mutual funds, is that you're getting this cheap, you're getting this at 10 rupees. How valid is that sales pitch for an investor? Yeah, it is a very old myth, and it is the oldest myth, and it has to be busted. It has to be busted continually because that is when many years ago, about 10 years back, IPO of mutual fund used to be referred as IPO. That is when SEBI said that, let's not call it IPO just in case people will figure out that, okay, it is not IPO. But still it is being sold. The 10 rupee or 20 rupee or 1,000 rupee of a mutual fund doesn't matter because, the dividend or the face value or the NAV level of the fund doesn't matter because, think of it. If a fund's NAV is 10 rupee and another fund's NAV is 100 rupees, it is invested exactly in the same manner. Both go up by 20%. 10 rupee becomes 12, 100 rupee becomes 120. And your 5,000 rupee will actually appreciate 20%. Whether it be 10 rupee, 15 rupee, 20 rupee at any level. So don't clear your mind of this. You are not buying a potato. You are buying something with the value of which will depend on the performance from the day you invest. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मार्क रमन रेड्डी, नमस्ते म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट साहब को। तो मेरा सवाल है ये बाइडेन ने अभी आर्मागेडोन टाइप का कुछ वापरा था, ये सब देखते हुए हाउ विल डेट फंड बिहेव इन केस इक्विटी टोटली फॉल and if we invest now take some exposure in debt, क्योंकि इक्विटी में हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, थोड़ा डेट बढ़ाना चाहते हैं, तो डेट कैसा बिहेव करेगा इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी जिसमें इक्विटी बहुत बुरी तरह से गिरते हैं, डेट फंड पे क्या फर्क पड़ते हैं? थैंक यू। डेट फंड पे मोटे तौर पे दो ही असर पड़ता है। कंपनियां जिनमें पैसा लगा हुआ है, जब इंडियन डेट फंड बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो पैसा लगा हुआ है, अगर वो लोअर रेटेड कंपनियों में अगर वो बॉन्ड खरीदा हुआ है तो अगर वहां डिफॉल्ट हो तो आपको नुकसान होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक फायदा है कि 2%, 4%, 5% ज्यादा होगा तो उतना पैसा आपका अटक सकता है, डूब सकता है और उसका प्रावधान भी किया हुआ है। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस, म्यूचुअल फंड के जरिए लोगों का एक्सपीरियंस बहुत डिसअपॉइंटिंग, 8-10 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं
लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाए तो लॉन्ग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के दाम गिरते हैं, और वैसी स्थिति बनी भी है। इससे बचने का आपके पास एक जरिया है कि आप ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले फंड्स में ही, डेट फंड्स में ही पैसा लगाएं। दूसरा विकल्प आज के दिन एक बड़ा अच्छा उपलब्ध हुआ है, जिसमें कि एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान, एक कांस्टेंट मैच्योरिटी का एक आपको एक टारगेट मैच्योरिटी फंड उसे कहा जाता है, कि आप क्योंकि डेट फंड का जो दाम है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उसका दाम गिर जाता है, और दूसरे निवेशक अपना पैसा निकाले तो फंड मैनेजर को बेचना होगा उस रिडेम्पशन को ऑनर करने के लिए। इन फंड्स में ऐसा होता है कि वो खास मैच्योरिटी के बॉन्ड ही खरीदे होते हैं, और अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं उस पूरे पीरियड तक, तो इस जो बीच में गिरावट हुई है उससे आप बच पाते हैं, और आपको काफी अच्छा अंदाजा होता है कि आपको कितना रिटर्न मिल पाएगा। और वो आज के दिन डिपॉजिट रेट से करीब 15-20% ज्यादा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव रिटर्न। उसके अलावा जो डेट फंड का तीसरा बड़ा फायदा है, जो कि अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपके गेन्स को कैपिटल गेन्स में कन्वर्ट करने का जो पोटेंशियल है, जिससे कि टैक्स इंसिडेंस काफी कम हो जाता है, खासकर बड़े निवेशकों के लिए ये खाता फायदा है। A related question we got, unfortunately the line dropped, but Pankaj from Delhi had asked that he wants to invest 2 lakhs in an emergency fund, and he wants you to suggest a good liquid fund for that. Or any other category if you would want to suggest any other category. Yeah, I would say that, that is liquid funds. My recommendation doesn't really add a great value to, because the best performing liquid fund and mediocre liquid funds they both will be safe, and the great performing liquid fund just might give you 5 basis points more, and it is very hard to guess. But I will still list a few of them, which is Axis Liquid, HDFC Liquid, and IDFC Cash. And Dhirendra, typically emergency funds are for a period of 6 months or so. Is liquid fund a better category, or short-term debt fund is a better category for emergency funds? For this period, the short-term maturity fund, because this is money which may not be required immediately, and one might hold on. और मुंबई से हमारे श्रोता आशीष लाइन पे हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मुझे धीरे से 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि जो ये बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो होते हैं और ये हमारे इक्विटी सेविंग स्कीम है, उनके रिटर्न प्लस माइनस सेम है, तो व्हाट आर द योर ओपिनियन ऑन बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में। और सेकंड, अभी आप बता रहे थे कि लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न फ्लेक्सी कैप में 17 है और लार्ज कैप का 16 है, तो मतलब सबसे ज्यादा लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स का देखेंगे तो भी फ्लेक्सी कैप ऊपर है लार्ज कैप से, और करंट सिनेरियो में लार्ज कैप में इन्वेस्ट में रहना आपके हिसाब से कैसा है? थैंक यू। लार्ज कैप में निवेश करने के से बेहतर है कि अगर आप अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर पाते हैं तो जरूर उसमें लगाना चाहिए। लार्ज कैप में लगाने के बजाय, क्योंकि लार्ज कैप को जो इंडेक्स फंड है, अधिकतर निफ्टी और सेंसेक्स फंड लार्ज कैप है, और वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है और एक निश्चित तौर पे उसका खर्चा कम है, तो एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है जिसका आप फायदा उठा पाते हैं। Dhirendra, I was reading an article in one of the magazines recently. It said that almost 80% of the large cap funds have not been able to beat the benchmark, whereas almost 80% of mid cap funds have beaten the benchmark. What explains this dichotomy? That it is very simply explained that the universe of large cap is pretty small, and it is very difficult for large cap fund managers to beat the index, given that their expense ratio is about 1%, and the large cap index ETF costs just about 10 basis points. So they have to earn 1.5% from a very limited universe to match the index. The mid cap or the small cap universe is huge, and the selectivity, because when you look at the large cap portfolio of various fund managers, it looks the same. When you look at the mid cap fund managers, it is not the same. They are all different. So you would say if anybody is looking at large cap, index or index funds or ETFs would be a better way to go. Yeah.
Let's look at another story before carrying on with questions. Rising for the second straight week, global crude oil prices posted their biggest weekly percentage gain since March. Brent crude oil prices surged 11% during the week to close at a 5-week high of $97.92 a barrel, while U.S. crude jumped 17% to end at $92.64 a barrel. Oil rallied on all 5 days this week, even as the dollar moved higher after data showing the U.S. economy was creating jobs at a strong pace gave the Federal Reserve a reason to continue hefty interest rate hikes. A strong greenback can pressure oil demand, making dollar-denominated crude more expensive for other currency holders. The price jump pushed both benchmarks into technically overbought territory for the first time since August for Brent and June for WTI. U.S. heating oil futures jumped 19% this week to their highest close since June, boosting the heating oil crack spread, which is a measure for refining profit margins, to its highest close on record. The Organization of Petroleum Exporting Countries and Allies, including Russia, known as OPEC Plus, agreed this week to lower their output target by 2 million barrels per day. We have another question from Rajesh, who is asking Virendra that my son is a minor. Can I invest in his name? I'm assuming he wants to invest in mutual funds. Yes, he can invest in his name, and but for that he'll have to open the bank account and he'll have to act as the guardian. All right. And this is a question that we get off the record many times, and I know you answered this earlier, but I was watching an interview with a CEO of one of the mutual funds, and she was mentioning about this gold and silver, which seems to be the new fad or trend in mutual funds. Is that the analogy or the metaphor she was using, or the simile she was using, was that gold was being compared to large cap funds in terms of stability, and silver was being compared to mid cap funds to give a return kicker. I know what you're going to say, but I'd still put it out there for you to answer this question. Do you agree with this analogy? No, I completely disagree with this analogy because this is a repository. It is gold and silver are ways to actually preserve your money. They don't go down, and when the world is on fire, they tend to withstand that. They turn out a little more resilient. Nothing more than that. I think large cap is you are the proportionate owner of big companies in the country, and you're entitled to all the earnings growth, and the dividends from those companies. So when the gold and silver, it will just sit there, and you have to depend on the new investors, other investors over a period of time willing to pay more. That will only translate into gains for you. Right. And one of our earlier callers had talked about NFOs, and of course we now, ever since the NFO ban was lifted, a lot of different kinds of NFOs have been coming, and I see two new NFOs that have been lined up this month, both in a sector which has seen a very good uptick, and many experts are saying that it's the start of a multi-year recovery cycle for that sector. And the sector that I'm talking about is the transportation and logistics, where the Nifty Transportation and Logistics Index has surged 14% in the past year, even as you just mentioned, Nifty 50 in the last 1 year has been relatively flat. So would this be a good time to enter this sector? And also there are some NFOs coming up. I'll tell you, it might be a good time to enter the sector. It might be a horrible time to get into the sector, because these NFOs are coming only because these sectors have done very well. And sectors do well, investors pour money, and after that they stop doing well. That is what we saw in the technology funds in 2000. That is what we saw in infrastructure fund in 2008. And I don't think this time it will be very different. Maybe the initial ones you make money, subsequent ones you don't. I'll tell you the reason why one should not invest in any such fund. Nothing prevents your diversified fund to invest in more in transportation and logistics companies. And nothing enables a transportation and logistics fund to invest elsewhere if the tide turns, if it becomes unfavorable. That is where we saw that, the infrastructure funds got trapped. Investors entrusted money, they could do nothing but invest in those companies, and it just refused to move up for the next decade. So, that's a big reason why one should never invest in such thematic funds or, sectoral funds.
धीरेन्द्र, हमने जैसे आज एक खबर देखी कि विदेशी निवेशकों ने, पोर्टफोलियो निवेशकों ने जो इक्विटी मार्केट में है उसमें इन्वेस्ट फिर से कम कर दिया है। काफी लंबे 9 महीने तक उन्होंने पैसा निकाला मार्केट से और फिर लगाया, 2 महीने के बाद फिर वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट लगातार कम हो रहा है, वो पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं, इसका म्यूचुअल फंड मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? वो निकालते रहते हैं, बहुत बार लगाते रहते हैं और ये बहुत सालों के बाद इस साल, पिछले 1-1.5 साल में ये साबित हो पाया, ये ऐसा हो पाया, साबित नहीं हो पाया है, हो पाया है कि भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने के बावजूद काफी मजबूती अपने आप दिखा पाए। और ये मजबूती ये केवल कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उससे ज्यादा पैसा लगाया उसकी तुलना में जितना पैसा निकाला गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विदेशी निवेशक इम्पोर्टेंट है, उनके पास काफी बड़े भाग हमारे बाजार का उनके पास है और उनका लगातार स्टडीली आना बाजार का रुख बिल्कुल बदलता है। और अगर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में निकाले तो अपना बाजार काफी रफ्तार से गिर भी सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो भारत का आउटलुक है, जिससे विदेशी निवेशक लगा रहे हैं या कभी निकाल रहे हैं, उसमें कोई अभी डेफिनेट ट्रेंड ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। Another question that has come in offline, Dhirendra, is from Shiva Prasad from Mumbai, and he's asking, I am recently retired. How much of my savings as a proportion should go to mutual funds? That's a wrong way of looking at it. All the money which is, a good part, maybe it could be 95%, because it depends. If he's accumulating, then, and if he's not conversant with the market, then all his long-term money should be invested into a mutual fund. And a small part should be in his bank account. Some other, even the money which he needs in 1 or 2 years time frame should be in bank account or debt funds. And what I'm referring to as mutual fund, for an experienced investor, it could well be, even NPS, or it could be a diversified equity portfolio, a bunch of shares held by somebody who understands what he's investing into and has the temperament to manage it. All right. Moving forward, if you look at broadly what are the categories that people should look at, your standard recommendation over for at least a year since I've been tracking your recommendation on Market Mantra is that people should look for 2-3 flexi caps, and if you're looking for a shorter term, probably an ultra short term or a short term debt fund. Would you still go with those recommendations in terms of a normal investors briefly? Yes, absolutely. This is the basic rule which everybody should follow, and at the same time, as you have been listening, even at the cost of sounding repetitive, I would say that first-time investors should never start their investment with equity. They should start with aggressive hybrid fund, which will be a steadier take on growth, and it will not crumble when the market shifts. Because that is very devastating. That is devastating or unnerving for the investor. जी धीरेन्द्र जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Thank you, Dhirendra. Before we close, a reminder of the headlines. India's gross direct tax collection jumps 24% to 8,98,000 crore rupees in the current fiscal. Foreign investors pump in over 2,400 crore rupees into the Indian equities market in the first week of October. And global crude oil prices rise for the second straight week. Brent surges 11% this week. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.